everyone, welcome back to my YouTube channel. As promised, I am back with another video. This is on IELTS reading and इस वीडियो में जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे वो है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस. आई थिंक ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस आर द वंस इनमें सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स मेरे लिए भी ये वाले क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग थे बिकॉज दे कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्विस्ट कर दिए जाते हैं बिकॉज नॉट गिवन वाला फैक्टर भी इंक्लूडेड है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स विद यू गाइज, जिसके बाद आई स्वेयर आपको ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट लगेंगे पूरे आइल्स एग्जाम में. दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो द सैम्पल क्वेश्चंस एंड द पैसेज विद यू गाइज. यू कैन ट्राई इट फर्स्ट एंड देन हम साथ में उस क्वेश्चन को करेंगे. विल फिगर आउट कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. जस्ट फॉर इन्फो, I got a 9 band in reading, which is the highest. So I got like a 40 out of 40 in reading section. And this is what I did. इस trick ने और इन steps जो मैं follow कर रही हूँ, they saved my time and they made it a lot easier for me in the examination center. So watch it till the end. Do not miss out on anything. We will now together solve the question. So let's get into this video without any further delay. Also, the book that I'm going to use is an official Cambridge book released by IELTS. जब भी आप अपने IELTS के लिए register करते हो, you get this book delivered at your home, so it is legitimate. And I'm going to do some practice from these real time test papers. So yeah, let's get into it. So this is the book that I'm going to be using, IELTS Academic 16 with answers, authentic practice test. So this is the passage that I'm going to be solving. इसमें थोड़ा clear नहीं होगा, but I'll post a picture अभी यहाँ पे, so you can watch that picture and read along with me. So this is the passage given and these are the questions. So in passage 1 in the reading section we have 7 questions of true false and then we have another 5 questions of fill in the blanks. That's how you usually receive your paper on an official exam day. So IELTS एग्जाम में यूजुअली क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें स्टार्टिंग में ही मिलेगा एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर कॉन्सिक्यूटिवली उसके बाद एंड थर्ड का उसके बाद मिलेगा. सो ऐसा नहीं होता कि रैंडम प्लेसेस पे आंसर प्लेस आउट नहीं होते, वो हमेशा सीक्वेंस में गिवन होते हैं. नाउ वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन हम ट्रू फॉल्स को मैच करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बियर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्ड ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. नाउ यहाँ पे अगर हम अपने कीवर्ड्स देखें, सो द कीवर्ड्स वुड बी पोलर बेयर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिल्डअप ऑफ फैट अंडर द स्किन. सो कीवर्ड्स हैं कि पोलर बेयर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फैट, मतलब फैट से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स पोलर बेयर्स को. नाउ लेट्स जस्ट गो बैक एंड रीड द पैसेज. सो फर्स्ट पैसेज सेज polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to the extreme conditions of the Arctic Circle, where temperatures can reach -40 degree. यहाँ पे कहीं भी तक फैट की बात नहीं हुई है, so it's useless to us. One reason for this is that they have 11 centimeters of fat underneath their skin. Humans with comparative level of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart diseases. Yet the polar bear experience such no consequences. Now if you read it carefully, यहाँ पे लिखा है कि polar bear experience no such consequences. Consequences क्या है? Diabetes and heart disease, जो कि humans को fat से होती हैं. So इसका clear answer is actually false, क्योंकि हमारे जो keywords हैं वो match नहीं कर रहे हैं. In the passage we're not talking about polar bears suffering from diseases caused by fat, but we're rather talking about humans who are suffering from diseases caused by fat. So obese also means आपको fat होता है. But polar bears do not have such consequences. It means आपका पहला आंसर पहले पैराग्राफ में था and it is false. It's wrong. Next question को पढ़ते हैं. The study done by Lee and his colleagues compared different groups of polar bears. Now keywords हैं Lee and his colleagues compared now the groups of polar bears. So it's clear कि हमारा आंसर जो होगा वो हमें सेकेंड पैराग्राफ के अंदर मिलेगा. A 2014 study by Shi Ping Lee and colleagues sheds light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears. So what they compared, हमें compare keyword मिल चुका है, हमें ये भी keywords मिल चुके हैं. Now we talk about genetic structure of polar bears. So what we're actually comparing is not the group.
यहाँ पे ग्रुप का मेंशन, ग्रुप हमारा कीवर्ड है बट ग्रुप का मेंशन है ही नहीं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बट वी आर रादर कंपेयरिंग द genetic structure of polar bears with their closest relative from a warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environments on Earth. Lee and his colleagues found that polar bears have a gene known as APOB, which reduces the level of low density lipoproteins, a form of bad cholesterol. जितना हमने पढ़ा है, it's clear कि हमारे जो keywords हैं वो हाफ मैच हो गए, बट एंड में हमारे कीवर्ड्स मैच नहीं हो रहे बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग द ग्रुप्स बट वी आर रादर कंपेयरिंग आर द जीन्स. सो इट्स क्लियर कि नॉट गिवन तो नहीं है बिकॉज आधे कीवर्ड्स तो मैच हो रहे हैं बट जो मैच हो रहे हैं वो सेम नहीं है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग द ग्रुप्स बट वी आर रादर कंपेयरिंग द जीन्स. उसमें डिफरेंस होता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Now we've done the second question. We'll move on to the third question. The third question is Lee and colleagues were the first researchers to compare polar bears and brown bears genetically. Now अगर हम second paragraph पे focus करें जो हमने पहले ही पढ़ लिया है and हमने last line remaining थी कि polar bears may therefore be an important study model to understand heart disease in human beings. तो इस पैराग्राफ में हमें ली एंड कोलीग्स का कीवर्ड तो मिला बट फर्स्ट रिसर्चर का जो की पॉइंट था वो हमें नहीं मिला. कंपेयर पोलर बियर्स भी है, ब्राउन बियर्स जेनेटिकली भी इसी सेकेंड लाइन में ही आ गया है बट देयर वाज नो वर्ड सच एज फर्स्ट रिसर्चर्स. सो इसका ये मीनिंग है कि जो हमारा कीवर्ड है वो मिसिंग है. And if our keyword is missing then उसका मतलब ये है कि it is not given. अगर आपको आपका keyword आपके आंसर में नहीं मिल रहा है then that means it is not given and एक not given की statement है. So till now we have solved for false, we have solved for not given. Now let's try the next question. Hopefully a true का हो. Let's see what this question is about. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. So keywords are control, bad cholesterol and genetic means. I think we read this passage. आपको याद हो तो इसमें clearly यहाँ पे बात होती है इसी सेम चीज़ के बारे में. And that is here. Lee and his colleagues found that polar bears had a gene known as APOB which reduces the level of low density lipoproteins, a form of bad cholesterol. So it talks about a gene. It talks about low density lipoprotein, that is a bad cholesterol. So it does have the word bad cholesterol. It does have gene and it does have reduces the level, which signifies that we have found all the keywords that we mentioned. We have control, we have bad cholesterol, we have genetic means, we have all the keywords. So it means that the statement is true. Now that is all you have to do in your exam. Read the question, pick out the keywords, match the keywords with your passage. Read the passage carefully, check if you have all the keywords and it is true. If you do not have all the keywords then it is not given. If you have the keywords but they do not match then it is false. I hope this was helpful. We can do more questions together but I think आपको एक basic idea मिल चुका है for false, for not given and for true. So that was all for this video guys. I hope जो भी tips मैंने इसके लिए share की हैं वो बहुत helpful होंगी आपके लिए and you're able to now solve these true false वाले questions at least बहुत easily. If you want then I can make more videos on reading के different type के questions, how to solve them, and I can also create more videos on listening and speaking, also your writing section if you want me to. Just comment down below whatever you want कि किस में problem face हो रही है. You can also email me if you feel like कि आपको किसी type के questions नहीं आ रहे हैं फिर you want to find more resource material. I can help you with that. I'll also put my email ID below. So that was all for today's video guys. Thank you so much for watching and if you like this then please share it with your friends. Give it a thumbs up and subscribe to my channel so that you will be the first one to know when I post a video on more educational content. So I'll see you soon in another video.